So let us go down now to the other sections in the CV. So the candidate has mentioned the software proficiencies, computer added three-dimensional indication. He has written one software, kaise, and he has given the full form of kaise, which is actually not required. Software proficiencies may many major things which he has missed. See, when you work, the major softwares which you are going to use is Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Excel, AutoCAD, maybe if you are a civil engineer. So सॉफ्टवेयर नोन में आप सिंपली एक सॉफ्टवेयर का नाम देके फुल फॉर्म मत लिखिए. I would suggest that you develop your profile and develop your skill set and understand and know how different softwares work. और आप सोचिए, आपने कॉलेज में या कहीं पर भी और कुछ सॉफ्टवेयर में जरूर आपने काम किया होगा. इवन इन बीटेक अगर आप इंजीनियर हैं तो एटलीस्ट एक कॉमन इंजीनियर वर्क्स अपॉन एज लेस एज लाइक मिनिमम 3 to 4 सॉफ्टवेयर में काम करता ही है. Civil engineer, for example, would have worked in AutoCAD, architectural desktop, similar Vissim, Flaxis, कुछ सॉफ्टवेयर में काम करता है. If you are from computer science, then definitely there will be a lot of softwares like R and Python, programming languages. Basically, you can put up in this section. Okay. Areas of interest में again, this is a not required field because this does not help in getting you the job. You need to bring the things up, the things which will help you in getting the job, and that is the work experience. In case you are having a working professional, definitely it needs to come in the top first half. You need to start writing the work experience. And in case you are a fresher, then you can, if you don't have that working experience, then you can write these parts, that software proficiency, what projects you have done. Now let us see what the candidate, how he is structured. So the main project, he has written all this shit in, as this is only about one project. The project area was design of 3D working IC engine in kaise software. He's written about kaise software already. Design of demonstrative model. This does not explain what the project did. So he has written that it was for designing of 3D working, but he has not mentioned how he has done it. So he needs to capture that he has worked in a team of say 4 or 5 under so and so professor and achieved what's so special about this design. This he has not mentioned. Now main project, when you are mentioning main projects, it has to be something which is important because the interviewer will be asking you about this project. And if you don't have anything to say and you just mention general things, that yes, we designed it on the software, demonstrated model of an IC engine or something, working in done and in working condition. This is like shit. This is not at all required to be mentioned. Now what is required to be mentioned here? What you require to mention here is, first you need to highlight the skill. That yes, I can do work on this software. Suppose you are applying for a mechanical engineering job, so you need to mention that kaise software पे अब मैंने काम किया है. Project title में आप दे दें, but एक ही उसी line में you have to include that you have to explain briefly what the project was about, how the project has helped in solving a problem, what was the problem that you were solving. और उस project में आप बताइए कि you have worked in a team of 5 or you have done it alone, and this software is currently being maybe used by the university or the college for solving this and this problem. Like the Dassault system, software used for designing kaise, he has mentioned kaise at least 3 to 4 times he has mentioned. You need to avoid this. Okay. Then the industrial visit. So this is basically an internship. It is an industrial visit. He has mentioned about the internship, but he has not mentioned what he had done in the internship. If he has done an industrial visit, what is the thing he learned? You need to write as a candidate that observed so and so things in Madhya Pradesh hydel power plant. I learned this and this process, I have engaged with the staff to learn so and so things. So he has worked as a trainee. He must have learned at least something to write at least one line there. Now training and workshops undergone, so you can mention the workshops and the trainings conducted. Again, this is an important part.
Now coming here, now from the point of view of a working professional, this is the most important section. This needs to come here at the top. Like if you are a working professional, after academic qualification, you need to start writing your experience. You cannot keep software proficiency, area of interest, or anything at the top. The first half, you need to capture the interest and attention of the recruiter. Okay, so regarding your job, again, mentioning like this company name, designation, working experience, blah blah blah, it is useless. You do not need to give it that form. I will show you how good CVs are made, but today we are discussing on the common mistakes. So इसमें आपको mention करना है कि कंपनी का नाम definitely आपको लेफ्ट साइड में mention कीजिए. बीच में आप लिखिए कि आपने क्या किया, आपने क्या क्या चीजों के लिए responsible थे. Use some action verbs like like handled or managed or responsible for doing this and that. आप mention कीजिए exactly आपने क्या किया, and you mention the improvements which you did. You mention the achievements which you had. और राइट साइड में आप पीरियड दे दीजिए कि आपने कब से कब तक ये काम किया है. सो लेफ्ट साइड इज कंपनी नेम, मिडिल में यू नीड टू गिव द वर्क यू हैव डन एंड अचीवमेंट्स. द राइट साइड में यू कैन गिव द पीरियड. Then coming to achievements and extracurricular activities. So extracurricular का definitely section रहना चाहिए, उसमें आप top 2-3 चीजें आप mention कर दीजिए. Again, personal trait, this is completely a useless thing because if the because a recruiter does not hire you based on the personal traits that you mentioned on the CV. He hires you for 3 things. Okay, that will come at the what the recruiters see in your profile. We'll come to that at the end of this video as the golden tips. Now coming to hobbies. So hobbies, the candidate need not mention because he has already given mentioned the extracurricular activities. इसमें आप hobbies जो है इसी section में आप डालिए. Mentioning again and again similar fields is simply wasting the space. And then the personal profile, all this information can be done away with. You need not mention in the CV. No company is going to do this, to go through all this, and so much space he has wasted here. And this personal profile you can share. You anyways आप जब job के लिए apply करते हैं naukri.com या कहीं पर भी, तो personal profile आपकी तो portal में ही रहती है. CV में mention करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. Now coming, so all this information you see, all the yellow highlighted things which we have like half page this side and half page here is actually information not required. अगर ये candidate मेरे पास आता तो मैं इसका CV कभी भी shortlist नहीं करता. Okay, because he has not communicated. A CV is a tool for communication to the recruiter on why we should select you. Now we come to the golden tips. So first golden tip, let me open and write for you. Yeah. So the first golden tip is you must showcase the required skills. ये एक बहुत ही जरूरी चीज है. आपको कोई भी कंपनी या कोई भी रिक्रूटर शॉर्टलिस्ट करता है आपके स्किल्स की वजह से. अगर ये जॉब कोडिंग की है तो वो देखेगा आपके सीवी में कोडिंग के स्किल्स हैं कि नहीं. अगर जॉब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो वो सबसे पहली चीज चेक करेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज आपको है कि नहीं, आपने उससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं कि नहीं, या आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं. अगर आप कोई डॉक्टर या नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी रिक्रूटर है वो आपको चेक करेगा कि आपको एक्सपीरियंस कितना है मेडिकल फील्ड में. स्किल्स रिक्वायर्ड एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है so that you come into the consideration set of the recruiter. So in your CV, the first and foremost important thing that you should do is you should showcase the required skills for the job. Okay. Now second thing is basically background consistency. मैंने देखे हैं बहुत सारे सीवीज जहां पर कैंडिडेट्स कुछ लिखते हैं कि मैंने ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है, बट कहीं पीरियड्स जो वो टाइम मेंशन करते हैं, ईयर मेंशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनस नहीं होता. सो बैकग्राउंड आपको कंसिस्टेंट लिखिए. इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलत नहीं देनी है. गिव करेक्ट इन्फो. ठीक है. तो आपकी प्रोफाइल में देखिए कोई भी जॉब खोजने के लिए आप
गलत काम करके जॉब नहीं खोज सकते हैं, अनएथिकल हो के आप जॉब नहीं खोज सकते हैं, बिकॉज एनीवेज कंपनी को आपको पूरे डिटेल्स देना ही है, कंपनी आपके पूरे बैकग्राउंड चेक करके ही आपको हायर करेगी। सो गिव करेक्ट इन्फो एंड कीप योर बैकग्राउंड कंसिस्टेंट। अगर आपके प्रोफाइल में गैप है तो आप गैप दिखाइए, आगे चल के मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ कैन यू जस्टिफाई अ गैप इन योर प्रोफाइल। बट अगर गैप है तो आप गैप दिखाइए, अगर मार्क्स कम है तो आप मार्क्स कम दिखाइए, बैकग्राउंड आपका जो है कंसिस्टेंट रखिए एंड गिव करेक्ट इन्फो। Third thing, which is the most important, this is the thing which all recruiters will see and try and see in your profile, is peaks in the profile. So peaks, all recruiters look for peaks in the profile. Peaks मतलब आपने अपने कोर्स ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें अचीव की हैं। दे विल लुक आउट फॉर अचीवमेंट्स विच विल सो विद द हेल्प ऑफ विच यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अगर किसी इंटरव्यूअर के पास में 15 सीवीज हैं और एक पोजीशन है तो वो 15 सीवीज देखेगा और उसमें देखेगा कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके प्रोफाइल में पीक्स हैं। पीक्स फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन, अगर आप समझ लीजिए कोडिंग का काम करते हैं, बट अगर आप लिंक्डइन पे फॉर एग्जाम्पल कोडिंग के गुरु हैं, कोडिंग के ऊपर रेगुलरली पोस्ट करते हैं, कोडिंग के ऊपर आपकी वॉइस जो है यू आर द लाइक द टॉप 100 वॉइसेज ऑन लिंक्डइन, तो ये एक तरह की पीक है, समथिंग विच यू आर डूइंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कोर जॉब के लिए से साइंटिफिक जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपके सीवी में ऐसा है कि आपने रिसर्च पेपर किया हुआ है, आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है, देन दैट इज अ पीक। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई मैनेजर हैं किसी कंपनी में और आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैनेजर के रोल में आपने क्या अचीव किया, क्या आपने फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोक्योरमेंट से हैं या सप्लाई चेन से हैं तो क्या आपने सप्लाई चेन में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, आपने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कुछ इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से बहुत सारी सेविंग्स हुई है, कंपनी को पैसे बचे हैं, दैट इज अ पीक इन द प्रोफाइल। So similar to this, you need to keep all the three in mind and focus and work upon the areas which I mentioned. ये तीनों चीजें आप दिमाग में रखिए और हम फिर मिलेंगे इससे भी अच्छे वीडियो के साथ में। थैंक यू so much, and also just before I close, please subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.